Hello बच्चों, the question says here nuclear fission and fusion reactions are example of conversion of mass into energy are example of conversion of mass into energy. Can we say strictly speaking a mass is converted into energy even in an exothermic chemical reaction? Even in an exothermic chemical reaction. Here the first of all हम key concept को highlight कर लेते हैं. The key concept is nuclear fission and nuclear fusion. Nuclear fission is nothing but बेसिकली एक न्यूक्लियस का स्प्लिट होके दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस में कन्वर्जन होना, दैट इज वन हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन. लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन इज two or more small nuclei combined together form a heavy nucleus. This is a nuclear fusion. और ये होता है यहाँ पे like can we say it is a क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास का केमिकल एनर्जी में हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है या नहीं. तो सबसे पहले सपोज हियर अ particle or a nucleus A, if it is going to split, if it is going to be split and nuclear fusion होता है यहाँ पे, तो this is going to be give a two small nuclei like B on C plus some heat energy is released, plus some heat energy. हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी यहाँ पे, हीट एनर्जी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी यहाँ पे, हीट एनर्जी इज इवॉल्व. बट ये हीट एनर्जी आई कहाँ से है? बिकॉज ऑफ देयर इज अ मास, देयर इज अ सम मास, this mass is going to be converted into the heat, tremendous amount of heat. So we can say that mass is being converted in the exothermic reaction. So as we can say mass is converted in energy in exothermic reaction, in exothermic reaction. But this conversion of mass is very negligible or very less. But ये जो conversion है mass to energy is very less, is very less. Hope you understand it well. Best of luck.